guys, Rom Guruji here, back with another video. And this time it's a very special video for me because our channel, just crossed 1000 subscribers. And I decided that I had to make this video to thank all of you guys who shared my video, liked my video, disliked my video, commented on it, whether nice or criticizing it. I've learned a lot through all of this. And my subscribers, they're like gods. They're really nice and they always pump me up. They always comment on the videos if it's going good. If something is not going good, they're the first ones to comment so that I know that something has gone wrong. I'm really thankful to you guys. Moreover, I decided to give something too, since we crossed 1000. So I decided to tell you some amazing news about Originverse. Now this is way earlier than I've planned, so I still don't have screenshots of it and stuff. But I've read way too many leaks, and I'm here to just tell you all of those leaks. But before we do that, if you're new here, press that subscribe button and the bell icon for all the notifications. And अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में देख सकते हैं. And let's get started. So guys, Originverse. It's like a unicorn to every IQOO 3 user. It's a unicorn to every Vivo user too. Why? Let me tell you why are people so excited about Originverse. Have you seen the FunTouch OS? FunTouch OS is really bland. It's really, you don't have a choice. There's no bootloader unlocking. There's not much to do as far as customization goes. It's pretty behind its competitors. So when the news for OS came, a very huge part of me did not even believe that we're going to get something different. But then Digital Chat Station leaked the story of OS coming to IQOO 3. Right? It was being tested on IQOO 3 and that really got me excited. I made a video, a lot of people got happy with it, but a lot of people also got worried that will they actually get it or are the hopes just getting high? So then I realized I had to research more, I had to see more. So researching and seeing, I found out that IQOO is Vivo's golden hen. IQOO is giving much more profits to Vivo than it earlier used to get. So IQOO is going to be upgraded for OS. It's as simple as that. Why would you not upgrade something that is giving you profit? It's the basic rule of business. But wait, I am not just speculating on that point. You remember I had made a video about Android 11, right? It was given by Vivo. It was not given by IQOO, it was given by Vivo. And it was given the same for Indian phones, it was given the same for China phones. That means they were concurrently running the updates. The updates were running together, right? So yeah, if you're an IQOO 3 user, you're watching this right now, you will get that update. Do not worry about it. It's amazing. And I'm going to tell you more about the update, but do not worry, right? And obviously subscribe because I'm going to give you the news. Now that we have that done, we have that news cleared, what's going to come? Well, the best part I like is that there's going to be a switch. You can either use it as a stock Android. If you haven't seen how stock Android looks, the Pixel Experience ROM video for 60 is here. You can see how it feels and looks. It looks exactly like Pixel. It is amazing. Or you can choose the OS version, which is apparently developed by members who used to work for Apple. So that design philosophy will be really exciting to see. The icons are flat and have a really material design, which I love. Right, there are only such less switches and screenshots available about it. It is really difficult to find it out, but genuinely amazing looks, amazing design style. I think it will be too colorful for a few people because as far as OS goes, if you've seen Vivo's current FunTouch OS, it does not have colors. So Vivo is trying to make its FunTouch OS seem more fun with OS. They want to make it look better, they want to make it look good, and that is why this whole thing is going to come together. Now, will it come right away on 18? By the way, the date has been moved to 18 November. Why? Huawei is announcing their OS in exactly 1 month after Vivo. So they wanted an edge. Even though that seems to be a speculation, Vivo is doing really well right now, especially in China, and their IQOO brand is doing much better. They don't want to lose that edge to Huawei.
hence they are doing this a little earlier, because the only complaint people have with these phones is the OS. So they're improving that, and it's going to be pretty colorful. It's going to be very material design oriented. I still don't know if whether the quick settings have been changed, but according to Digital Chat Station, the quick settings have been redesigned. That means you're going to get a beautiful drop down quick settings, which is really currently non-existent on FunTouch OS. Notwithstanding that, you're going to get beautiful freeform window management, you're going to get an updated game mode, you're going to get a beautiful, very material design iManager app, and generally, I do not have a problem with iManager app. It's one of the most useful apps in a Vivo phone. But it is also said you can just switch to stock Android, and oh my god, who can deny that? Having the ability to switch between two types of main looks is amazing and unprecedented. So do wait for it. I will give you updates. Thank you for the 1000 subscribers. This is all for this video, at least for English. I'll see you in the next one. Let's go to Hindi now. So guys, पहले तो thank you 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों की वजह से हुए हैं, आप लोगों की मदद, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए उसके वजह से हुए हैं, थैंक यू। तो इसी स्पिरिट में मैं बताना चाहता था आपको ओरिजिन ओएस के बारे में। तो ये मैंने प्लान किया था उससे काफ़ी पहले हो गया है अच्छी बात है मतलब ऐसे कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं आया है मेरे पास पर उसके लिए। तो मैंने काफ़ी साइट्स पे लीक्स पढ़े, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। बाय द वे जो लॉन्च है ओरिजिन ओएस का वो जल्दी हो गया है, क्योंकि हुआवे उनका 1 महीने बाद ओएस लॉन्च कर रहा है, और वीवो को अपनी एज नहीं लूज़ करनी है, क्योंकि चाइना में वीवो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, उनका आईक्यू ब्रांड तो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। इसी बेसिस पे जो काफ़ी एक आईक्यू यूज़र्स का डाउट है कि क्या हमें ओरिजिन ओएस सच में मिलेगा। तो जो आपने एक मेरा वीडियो है एंड्रॉयड 11 वाला, ऊपर आई बटन में, तो वो जो एंड्रॉयड 11 वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने जो डाउनलोड फाइल दी है, मैंने जो खुद डाउनलोड किया है, वो आईक्यू ने नहीं दिया है, वो वीवो ने दिया है। और इसका इम्प्लीकेशन मैं बताता हूँ। इम्प्लीकेशन ये है कि वीवो अपने फ़ोन्स को कंकरेंटली अपडेट कर रहा है। तो मतलब चाइना में जब अपडेट आता है तो इंडिया में आता है ना। तो वो जो क्लोज बेटा होता है, वो क्लोज बेटा मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपनी कंट्री में पहले करती हैं, फिर बाद की कंट्री में करती हैं। बट जो ये जो अभी जैसे ओपन बेटा था एंड्रॉयड 11 का, फंटच ओएस 11 का, वो iQOO 3 इंडिया में भी आया और iQOO 3 चाइना में भी आया। तो वो कंकरेंटली अपडेट हो रहा है। तो आपको ओरिजिन ओएस का अपडेट मिलेगा, उसकी सारी साइंस दिख रही है। अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो जाए कि कोई बोल दे कि हमें iQOO ये ब्रांड इंडिया में एग्जिस्टेंट नहीं चाहिए, इनसे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो आपको तो 100% मिल रहा है ओरिजिन ओएस। डरो मत, अब चिल करो। अब ये सुनो कि ओरिजिन ओएस में है क्या। तो ओरिजिन ओएस है, ये कलरफुल होने वाला है। तो आपने फंटच ओएस देखा, बिल्कुल कलरफुल नहीं है। उसका स्टेटस बार तो इतना फीका है, कोई कलर ही नहीं है। तो क्या होने वाला है इसमें जो है, स्टेटस बार कलरफुल होगा, मॉडर्न होगा, डिज़ाइन उसका एप्पल वाले लोगों ने किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एप्पल वाले मतलब जो पहले एप्पल में काम करते थे, तो एप्पल वाले क्यों करेंगे। पर ये छोड़ के भी आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बताता हूँ मैं। आपको एक चॉइस मिल रही कि आप स्टॉक एंड्रॉयड पे स्विच करो या ओरिजिन ओएस, दोनों अलग नहीं है, एंड्रॉयड ही है। बट जो लुक होता है ना, वो आप समझो आप एक फ्रेंड से मिलने गए, उसको ना पिक्सल फ़ोन से बहुत जलन है, उसको स्टॉक एंड्रॉयड बहुत पसंद है। कुछ नहीं, आप अपने फ़ोन को स्टॉक एंड्रॉयड पे स्विच करके ले जाओ, आपका स्टॉक एंड्रॉयड वाला दिखने वाला फ़ोन होगा। दूसरे फ्रेंड को बहुत कलरफुल फ़ोन पसंद है, वो आपका देख के वाह वाह करेगा, आप कलरफुल पे स्विच कर लो, वो आपके ऊपर है। बट ये जो आपके ऊपर है, ये जो डिसीजन है, ये कंज्यूमर को देना मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया मूव था। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। इसके बाद उन्होंने स्टेटस बार चेंज किया है, फ्री फॉर्म विंडोज़ चेंज किए, आई मैनेजर का लुक चेंज किया, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। आई मैनेजर वैसे तो बहुत बढ़िया ऐप है, पर दिखने में काफ़ी पुराना लगता है। तो ये सब वीवो चेंज कर रहा है। और न्यूज़ तो आपको 18 को मिलेगी। 18 को अगर मैं बता रहा हूँ, किस्मत अच्छी हो ना, मेरे जैसे 1500-1600 सब्सक्राइबर हो गए हो, तो आपको तो 18 को ही अपडेट आ जाना चाहिए। करोगे बट सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, 18 को वो अपना शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं कि कौन से फ़ोन को कब अपडेट मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं वो देखने वाला हूँ। फिर वो देख के मैं आपको सब बताऊंगा कि हाँ भाई iQOO 3 को कब आ सकता है, V20 को कब आ सकता है, सब देख के बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए है। और इसी बात पे ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। बट गाइस, थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए। ऐसे ही हमारा ये रोम गुरुजी चैनल बढ़ता रहे और मैं आपको कूल चीज़ लाते रहूँ। मिलते हैं अगले वाले में। चलो बाय।